हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर्टरी क्लासेस। देखो पिले आज कौन करिया पिले हमें क्वेश्चन नंबर 3 रु 2 रु पिले 5 जाई करबा 2 3 5 4 प्रश्न दा पिले हला 4 5 प्रश्न दा पिले एक्सरसाइज 7 ए रो क्वेश्चन नंबर चलछि पिले क्वेश्चन 1 ऑलरेडी हमर सरी जाई छि पिले क्वेश्चन नंबर 2 रु 5 जाई करबा अछि आ गोटे क्लास से कन करबे 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन दे कर दवा पिले हला तर कोन 7 रो ए पर हमें कंप्लीट ही जो पिले जाके कंटिन्यूटी पार्ट पर कंप्लीट ही जिवो तापर हमें डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट को जिवा पिले ठीक अछि। देखो पिले स्टार्ट कर जो क्लास टा और जो माने पिले हमरो क्लास देखि न फर्स्ट में क्लियर थ्योरी पार्ट देखि आसो पिले काई की कंटिन्यूटी पाई फर्स्ट टाइम कोन दका अछि लिमिट दका अछि लिमिट ऑलरेडी हम सरी जाई फर्स्ट ईयर रे पिले तो टेंशन न लागले होबनी पिले आ तास तो आपरे कोन करिया डिफरेंशिएबिलिटी करिबा बा डेरिवेटिव करिया पिले तार भी कोन अछि पिले ऑलरेडी फर्स्ट ईयर रे किछि बेसिक पार्ट हमर हेई छै देखि आसो पिले सुविधा होय रे बुझिया ठीक अछि ना पिले ओके। देखो आज कौन करछे पिले पेज नंबर 203 एलिमेंट बुक रो क्वेश्चन नंबर होछ पिले 2 एक्सरसाइज होछ के तमटा 7a तले क्वेश्चन हम कोन दला इफ ए फंक्शन f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू a जदी गुटे फंक्शन कोन होछ पिले कंटीन्यूअस हे गेला क्वेश्चन देई छि पिले डाम से पचला फाइंड दिस वैल्यूज हला पिले तो कोन करे फर्स्ट टाइम एडी सिंपल क्वेश्चन डा पिले हला देखो सॉल्यूशन भी इजी हो हम पे एटा कोन देखो पिले फर्स्ट टाइम गिवन लिखिबा गिवन a function f is continuous at x equal to a that means pile हम लिखि परिबा एठी limit of x tends to a f of x is equal to f of a pile भला मीनिंग बुझो if a function is continuous at x equal to a that means at x equal to a the limiting value equal to function value जानिछो भला हबे ताले कोन फंक्शन एठी हम कंटीन्यूअस जियो पिले हला तो फर्स्ट टाइम में कोन लिखिला को लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू लिखले फंक्शन वैल्यू आकु जरी हम टिके चेंज कर दबा लिमिटिंग वैल्यू रो मीनिंग कोन पिले LHL इक्वल टू RHL दैट मींस देखो एठी हम लिमिट ऑफ रखिबा x टेंड्स टू होची a माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ होची x टेंड्स टू कोन हबो a प्लस f of x दिस इक्वल टू होची f of a दिस इंप्लाइज टू पिले तो हमें लिमिट टिके चेंज करबा कोन देखबे आसीबो एठी लिमिट ऑफ रहिबो पिले h टेंड्स टू 0 हबो हला f of कोन लागियो x प्लस रे कोन लागियो a माइनस x लागियो दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ होची पिले x टेंड्स टू तमाको h टेंड्स टू 0 कर दबा f of कोन लागियो पिले x x तो नहीं हमर a थला ना तो कोन लागियो पिले a प्लस h लागियो दिस इक्वल टू होची कता हमर f of दैट मींस हमें कोन पाइले पिले limit of h tends to 0 f of a minus h value limit of h tends to 0 f of a plus h value both कोन होचा हमरा f of a को डिफाइन करछु तो ये होची फर्स्ट हमर बेसिक स्टेटमेंट पिले को रहला हमर गिवन स्टेटमेंट रहला पिले जेहेतु फंक्शन रा होची कंटीन्यूअस दैट मींस कोन हबो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शन वैल्यू नेक्स्ट कोन पिले एज द लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट सो LHL इक्वल टू RHL आकल डिफाइन करले इन टर्म्स ऑफ h रे पिले एती फर्स्ट काम सरला सब क्वेश्चन आराम से ही परियो पिले कोन देखो मन रखिया पिले h रा वैल्यू सबले कोन हबो टेंड्स टू होची पिले 0 प्लस का पिले हला काहे कि देखो पिले बिकॉज़ h होची रे डिस्टेंस ता पिले हला ऑलवेज कोन हो वैल्यू हमरो 0 प्लस रे डिफाइन करबो एठी हला तो ए केस रे तुम चाहिला को प्लस भी लिखले किछि भूल होबो नै पिले ओनली पॉजिटिव पाई ही डिफाइन हो पिले नेगेटिव वैल्यू किछ नाही पिला ठीक अछि ना पिले नेक्स्ट स्टेप काम कोन देखो पिले जेहेतु वैल्यू फर्स्ट टाइम एठी सैटिस्फाई करला आकु देते में इक्वेशन 1 दे दो पिले एबे 1 बाय 1 पॉइंट को जिबा पॉइंट नंबर 1 देखले कोन पचला से हमको से पचला बेले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ इनटू f of a plus h plus f of a minus h okay this equal to pele half को half रहला f of a plus h अच्छा गुड जिंस मिसिंग कर एठी मोबले लिमिट हमर थिला लिमिट ऑफ होची h टेंड्स टू 0 प्लस पाई राइट अच्छा काम का लिमिट भीतर नै जे बेले लिमिट ऑफ रहबो h टेंड्स टू होची 0 प्लस f of a plus h प्लस लिमिट ऑफ होची पिले h टेंड्स टू होची 0 प्लस f of होची a minus h ओके दिस इक्वल टू पिले हाफ को हाफ रखिले
देखो बोले भला भाबे लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 प्लस a प्लस h f of a प्लस h केते बेले आसीबो f of a एटी कोन लिखि मु f of a लिखिबी सिमिलरली आ बेले कोन हो बोले f of a अगेन कोन लागियो बोले f of a लागियो तो कोन पहले कहले बोले हाफ इनटू 2 इनटू f of a 2 को 2 कैंसिल होला केते आंसर आछी बोले f of a दैट मींस बोले फर्स्ट जो क्वेश्चन हमर थिला और आंसर में केते पाइले f of a पाइले एई लाइन को सिंपल क्वेश्चन दा गोटे हला एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखो बोले क्वेश्चन कोन अछि हमरो पॉइंट नंबर 2 लिमिट ऑफ h tends to 0 plus half into this is our f of a plus h minus f of a minus h ओके नेक्स्ट काम कोन देखो दिस इक्वल टू बेले हाफ को हाफ रहला लिमिट जने भितरे मल्टीप्लाई करिबा बा हमें लिमिटिंग मिलना बेले h टेंड्स टू हबो 0 प्लस f of होची a plus h minus limit of होची h tends to होची 0 plus f of a minus h this equal to half को half रहला आरो वैल्यू केते को बेले limit of h tends to 0 हला limit of h tends to 0 f of a plus h होची f of a limit of होची बेले h tends to 0 f of a minus h केते बेले f of a तो एक केस कोन लागियो एठी वैल्यू आसीयो बेले f of a minus होची f of a that's why this equal to हिजिबो half into 0 आंसर होची केते बेले एठी हमरो 0 तो कोन पहले अवेलेबल दिस इक्वल टू बेले ये आंसर 0 आछे तो फर्स्ट वैल्यू आंसर होची f of a सेकंड आंसर बेले 0 आइला ई खाली पोस्ट करी कॉपी कर दे इजी क्वेश्चन दा गोटे बेले आराम से ही परियो एटा हार्ड किछि भी नहीं बट एक कांसेप्ट के आईडिया कर दो बेले हे जिबा ठीक अछि पोस्ट करी नोट कर दियो तो इठी आवर बेले क्वेश्चन नंबर 1 सल्ला पहले 2 नंबर क्वेश्चन सल्ला बेले आज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर होचे 2 पेले बहिरो क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा क्वेश्चन देखम पे कोन अछि क्वेश्चन 3 हम को होची पेले फाइंड द वैल्यू ऑफ a रो वैल्यू से पूछला such that the function f is defined by this statement हम दला पेले is continuous given अछि continuous देछि at x equal to होची केते 0 पॉइंट तो x equal to 0 पाई फंक्शन जदी continuous हला then what is the value of x sorry a this is our question ठीक अछि ना बेले काम कोन देखो अगेन बेले ये भी कोन अछि हमरो पेज नंबर 203 रे पाई जिवो 11 बहिरो क्वेश्चन डाटा हैला देखो बेले सॉल्यूशन पार्ट रे हमें कोन करबा फर्स्ट हमें गिवन लिखिबा गिवन f of x equal to ये होची पेले sin of होची ax by sin x if x not equal to 0 the value is 1 by a if x equal to 0 ये फर्स्ट हमरो क्वेश्चन देइ फर्स्ट हम काम कोन होची बेले फंक्शन वैल्यू काढिबा फंक्शन वैल्यू एट x equal to 0 x equal to 0 पाई फंक्शन वैल्यू केते अछि वैल्यू फंक्शन वैल्यू होची 1 by a so f of 0 equal to ही जिवो 1 by a फर्स्ट काम सरला नेक्स्ट काम को जिवा पहले हमको लिमिटिंग वैल्यू दरकार अछि लिमिट ऑफ x tends to 0 0 पाई काटछो हमें हैला क्वेश्चन पे कोन अछि ले sin of होची पहले a x by ही जिवो x sin x हबो हैला दिस कोन अछि पहले लिखबो लिमिट रखेले x tends to होची 0 बेले sin x into 1 by होची बेले sin x हे पले ठीक अछि बस sin x by 1 कर दो और बेटर हो बेले ठीक नेक्स्ट काम कोन देखो बेले दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ होची पेले x टेंड्स टू होची केता हमरो 0 sin ऑफ होची x बाय कर दबा x बाय तमे कर दबा बा तमे x कर दे बेटर होबो इनटू पेले ax बाय होची बे केता इठी हमरो ये हिजबो sin x ठीक के चेक करो भला है पेले क्वेश्चन कोन थला sin ax by 1 थला तो कोन कहली मोठी ax into n बाय कर देली हला पेले नेक्स्ट काम कोन देखा थरो दिस इक्वल टू पेले ये तो कांस्टेंट को बाहर कर दियो a into लिमिट ऑफ होची x टेंड्स टू हबो 0 ये जो पेले sin ऑफ होची ax by ax into अगेन लिमिट अप्लाई करबा x टेंड्स टू 0 पाई x by होची sin x अब तुम जानि जो वाला है पेले sin ऑफ ax by ax रो केस
तो ये लिमिट देखो बेले x टेंड्स टू 0 अछि ने बेले ऑब्वियसली कोन हो x आल्सो टेंड्स टू 0 हे परिबो हेले तो a केस रे बेले आर वैल्यू केता आसीबो हमर आर वैल्यू हो 1 आ वैल्यू हो बेले 1 दैट मींस केता हला वैल्यू a आसला बुझ पालो भला आबे आर वैल्यू आबे 1 पाई गेले बेले नेक्स्ट एबे काम कोन देखो बेले हम कोन दरकार अछि कोन गिवन थिला कंटीन्यूअस गिवन थिला बेले एटा कोले हमें फंक्शन रो वैल्यू काट देले एलएचएल रो वैल्यू काट देले बेले हला देखि दबा एठी एज द फंक्शन क्वेश्चन दे चलेडा the function is continuous at x equal to 0 so limit of x tends to 0 f of x equal to f of 0 तो limit of x tends to 0 f of x value केता आछि value आछि a is equal to f of 0 बिले केता value आछि 1 by a that means बिले a square equal to होछि 1 so what is the value of a plus or minus 1 this is our answer so question रे थिला बिले what is the value of a पचला if the function is continuous तो मन रखिया बिले the value of a is plus or minus 1 हला for the function is continuous okay ठीक है पोस्ट की कॉपी कर दिया बिले क्वेश्चन नंबर 3 सरला ये भी हम सेम बिले पेज नंबर 203 रो एलिमेंट बही रो क्वेश्चन दा बेसिक क्वेश्चन दा गोटे बिले 3 मार्क क्वेश्चन बिले ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमर एटा 3 मार्क क्वेश्चन दा आस्ता ओके ना हाउ पोस्ट कर नोट करथिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 3 सरला क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा बेले क्वेश्चन नंबर कोन अछि if f of x equal to define करछीरा is continuous at x equal to 1 by से होछि continuous then what is the value of पचला बेले a and b रो value पचला बेले सेम क्वेश्चन रे बेले हला तो continuous भाषा में देछि लई एठी हमें सॉल्यूशन पार्ट रे given f of x is equal to a x square plus b for x less than 1 for x equal to 1 okay the value is 2ax minus b for x greater than 1 is continuous at x equal to 1 as the function is continuous we know that pele kono LHL equal to RHL equal to function value or kono pele limiting value equal to function value better habo so likhi deba pele limit of x tends to 1 f of x equal to f of 1 this means pele limit of x tends to 1 minus f of x is equal to limit of x tends to 1 plus f of x is equal to f of 1 तो देखो पहले कौन लिखियो एठी हमें लिमिट ऑफ होची x टेंड्स टू कौन लिखो एठी हमरो लिमिट ऑफ होची पहले h टेंड्स टू 0 कर दबा f of लागिबो 1 minus h लिमिट ऑफ होची पहले h टेंड्स टू 0 पई f of ए जीवो 1 plus h is equal to f of 1 तो आर डी मीनिंग बुझिया वाला हैला सो लिमिट ऑफ गुड मिनट लिमिट ऑफ h tends to 0 f of 1 minus h is equal to f of a by f of 1 पहले अब चेक करो पहले 1 minus h रो मीनिंग कोन before 1 पे क्वेश्चन कोन डिफाइन करछि ax स्क्वायर प्लस b ना तो कोन लिखा करी हमरो लिमिट ऑफ इज जीवो h tends to 0 पई एडी x प्लस रे कोन पड़िबो 1 minus h तो a into 1 minus h रो होल स्क्वायर plus b this equal to f of 1 value is 1 okay तो 1 पड़ला अब पाई जे बेले h equal to 0 पकेबा a into 1 minus 0 whole square plus b equal to 0 this means a plus b equal to 0 this is our equation 1 suppose similarly as LHL को डिफाइन में फंक्शन वैल्यू को अवेलेबल है सेम गंगा पे करियो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h equal कोन पकेबा f of 1 पकेबा and हला limit of h tends to 0 f of 1 plus h equal to f of 1 so this simple है कोन आसी बैठे हमरो limit of h tends to 0 1 plus h पहले 1 plus h माने more than 1
मोर देन 1 पे ये होची फंक्शन हमरो दैट्स कोन हबो 2a into x प्लस कोन पड़िबो 1 प्लस h पड़िबो माइनस b इक्वल टू होची बिले वैल्यू 1 आसीबो जदि में h इक्वल टू 0 पकेबा 2a minus b equal to 1 this is our equation number 2 हला on solving equation 1 and 2 जब हम सॉल्व कर दे अपनी इक्वेशन 1 and 2 वो है आंसर तो कौन प्रिपेयर है हमें एडिंग इक्वेशन 1 and 2 बेले जब मैं ऐड कर दबा 1 and 2 को a plus 2a 3a प्लस 3a plus b minus b कैंसिल हो गेला is equal to 0 plus 1 होची 1 this means पहले a equal to हो गेला 1/3 and 1/3 okay now equation 1 becomes कौन पाया पहले a plus b equal to 0 if a equal to 1/3 then b equal कौन होगा a plus b equal to 0 if a equal to 1/3 plus b equal to 0 this means b equal to minus 1/3 this is our answer so here a equal to 1/3 and b gonna be number minus 1/3 this is our question number 4 element of mathematics book page number 203 exercise 7a ओके बेले ये पोस्ट करी नोट कर दियो देन हमें क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा ओके भाबुची कॉपी करथिबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा देखो बेले आज लास्ट क्वेश्चन बा हमरो ए पेज रे पहले क्वेश्चन हो जे 5 हमरो एक्सरसाइज 7 ए रे क्वेश्चन ला क्वेश्चन हम कोन देला पहले so that sin x is continuous at every real number x so we have to show that sin x is everywhere continuous ओके ना नहीं पहले और तो थ्योरी हम हे अछि ऑलरेडी देखो पहले केमिन देखो शो करबा को सिंपल क्वेश्चन डाउला फर्स्ट लिखिबा गिवन और तुम दबले लेट नहीं गेला बेटर हो ओके लेट नहीं होछि पहले लेट f of x equal to होछि sin x we have to show that that function is continuous everywhere हला or every real x हला तो लेट में दबा let x equal to a be any real number any लिखि दो arbitrary real number okay be any arbitrary real number then first काम कोन पहले function value काढियो right function value at x equal to a that is f of a equal to ये हेगला sin a now LHL find करिबा आठ फाइंड करिबा जो कोन मारियो हमरो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करिबा तो कोन जासे बेठी हमरो LHL limit of x tends to a minus f of x this equal to as x tends to a minus x equal to a minus h where h tends to 0 so limit of h tends to 0 f of a minus h पड़ला देखो बोल चेक करो बोले फंक्शन होची गोटे फिक्स हमरो sin x रहला जदि f of x equal to sin x ला f of a minus h कोन हबो x plus से कोन बकेबा a minus h तो लिमिट ऑफ रहला h tends to 0 sin of a minus h दैट्स व्हाई बोले लिमिट ऑफ होची h tends to 0 या फार्मूला बगे दियो sin of a minus b फार्मूला sin a cos h minus cos a sin h okay then जरे में h equal to 0 पके बेले तो कोन आंसर होठी हमरो sin a cos 0 minus cos a sin 0 okay this equal to बेले sin a into 1 minus cos a into 0 आंसर स्ट्रेट हमरो sin तो LHL रो वैल्यू में केते पाइले sin a पाइ गेल नेक्स्ट काम कोन छबे RHL फाइंड करबा सेम क्वेश्चन ओके RHL again same काम करिबा limit of x tends to a plus f of x limit of h tends to 0 f of a plus h टिके भला बुझतो बेले इजी क्वेश्चन जाको ऑलरेडी बारंबार पढ़ना पड़छे बेले लिमिट चेंज करछे मींस x रे वैल्यू चेंज हबो ता उनसे वैल्यू पकेले a माइनस थिला a माइनस h पकेलो
a plus रे अछि बेले जो कोन खेरि हमें a x टेंड्स टू कोन हो एठी a plus which implies to x equal to he jibo a plus h where h tends to होछि कोन हमरो 0. So ये कैसे वैल्यू पकेबा लिमिट ऑफ h tends to 0 पाई f of a plus h in place of a plus h हम कोन थला x थला f of x equal to sin x. So f of a plus h equal to sin of a plus h. For this limit of h tends to 0 sin a cos h plus cos a sin h. This equal to तो लिमिट अप्लाई करिबा sin a cos 0 plus cos a sin 0 sin 0 value 0 cos 0 value 1 that's why केता आंसर अछि sin a is our answer. So LHL equal to RHL equal to function value that's why कोन होबले the function is continuous. H LHL equal to RHL equal to f of a. So the function is continuous for all real x. जेतु a ପାଇଁ continuous ना बोले a होची कोन any arbitrary real number तो सब जगह real number ପାଇଁ continuous हेला तो ये हला कोन एठी हमरो क्वेश्चन होची बोले 5 ठीक है नोट कर दे पोस्ट करके गोटे इंपोर्टेंट दमा को लॉन्ग क्वेश्चन भी हैपी लेवल लॉन्ग क्वेश्चन भी आसी पारे 5 मार्क क्वेश्चन रास्ता होची बोले हला तो ये सरला बेले आज हम बोले अप टू क्वेश्चन नंबर 5 सर दले बेले हला डिस्कस करे हम क्वेश्चन नंबर 6 रे बेले फॉर द क्वेश्चन पर सर दा बेले तो एक्सरसाइज 7 रो ए नेक्स्ट क्लास हम सरी जीवो तापर 7 रो बी को स्टार्ट करिया ठीक अछि तो आज बनी थाउ बेले थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो.